हिट विकेट बाय रैम्पस में आप सबको वेलकम करते हैं। और आज मेरे छोटे से चैनल को 3 साल हो गए हैं और मैंने कहा आज मैं 3 साल सेलिब्रेट करता हूँ हिजाब के साथ। ट्विटर पे तो इनकी गेम ऑन है बॉस, मैं सही बता रहा हूँ। और आने वाले टाइम की ये मतलब बहुत जबरदस्त प्रेजेंटर, होस्ट, एनालिस्ट और सिंगर भी। म्यूजिक आवाज कमाल। ये पिछले 2-3 महीने में इनका टैलेंट ये भी नजर आया है। बड़ी जबरदस्त इनकी क्रिकेट में इंसाइट और शदीद ऑप्टिमिस्टिक है। मतलब अगर किसी ने जिंदगी में ऑप्टिमिज्म सीखना है क्रिकेट को लेके तो इनकी 3-4 ट्वीट्स देख ले, ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है बंदा। मैं हो जाता हूँ समटाइम्स कि हाँ यार, क्योंकि एशिया कप में हम कई दफा बड़े दिल के मरीज बन चुके हुए थे सब, और इनके भी ट्वीट्स उस तरह कहते हैं, लेकिन एक होप होती थी कि यार कैसे रहेगा। तो हिजाब के साथ हम सबसे पहले बात करेंगे इनकी थोड़ी सी जर्नी पे कि हिजाब, थैंक यू सो मच, पहले तो आप आए हैं चैनल पे, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है। सो हिजाब वॉइस ऑफ क्रिकेट से स्टार्ट किया, लेकिन मैं उससे पहले जानना चाहता हूँ वो पहला मैच, वो पहला मोमेंट, हाँ यार ये क्रिकेट कुछ है, ये क्या है, वो क्या था। हम सबकी जिंदगी में वो मोमेंट है, आपका क्या था? सबसे पहले तो it's really really nice to be here, Ramesh. Thank you so much for inviting me. And this is a very special show. 3 साल हो गए आपके चैनल को, and we've all been listening to you. और आपका एक अपना ही स्टाइल है हर चीज को रिव्यू करने का, which is very nice और बड़ा अच्छा लगता है देख के सारा कुछ. So it's I'm really glad to be here for this special anniversary show of yours. दूसरा ये कि इफ यू आस्किंग मी कि वो पहला मोमेंट क्या था जब मुझे लगा था कि यार हाँ, क्रिकेट इज गोइंग टू बी अ गेम दैट्स गोना प्ले अ मेजर रोल इन माय लाइफ. तो आई थिंक दैट वाज प्रॉब्ली द 2007 T20 वर्ल्ड कप, जो पहला मैच हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, जिसमें वो, डू यू रिमेंबर दैट बॉल आउट जो हुआ था? या या तो वो जो मैच था ना, आई वाज लाइक यार हाँ, दिस इज द गेम दैट्स गोना बी वेरी वेरी स्पेशल टू मी. Although I've been watching it उससे पहले से, I think the first World Cup I watched was 2003, but I was barely like 7 or 8 years old at the time, so मुझे बहुत ज्यादा चीजें याद नहीं है उसकी. लेकिन I do remember watching it with my dad, और he was trying to explain all the cricket rules to me. और ये कौन है, ये explain, अच्छा ये वसीम अकरम है, ये वकार यूनस है, ये इंजमाम है, ये तो वो he was just trying to like make me familiar with the faces of Pakistan cricket at that time. So yeah, but the time that I felt very much closer to the cricket was the 2007 T20 World Cup, when we were this close to winning it, and it was the first edition of T20 World Cup. If we had won it, it would have been a very nice thing. लेकिन ये कि we won the second edition, so no complaints there. नहीं नहीं यार, वो जो T20 वर्ल्ड कप था, अभी रिसेंटली मैं आईसीसी की कुछ वीडियोस देखा था, एंड दे आर सेलिब्रेटिंग लाइक 15 years ऑफ वर्ल्ड T20 2007। आज वो वीडियो भी एक Yeah. वायरल हुई है युवराज के 6 सिक्सेस की, सो हम काफी रिलेट कर सकते हैं उस चीज से। सो इजाब, ये बहुत से लोग हम देखते हैं यूट्यूब पे अपना शो स्टार्ट करते हैं, बहुत से ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स है, एनालिस्ट है, वाई लाइक कमेंट्री और प्रेजेंटेशन का क्या वो कोई था अंदर से टैलेंट, या किसी ने कहा था कि नहीं है तुम में हिजाब, यू कैन डू दिस? तो वो कैसे वो पाथवे पे आए थे, वो क्या? क्योंकि बहुत से लोग हिजाब, मैं ये देख रहा हूँ कि फीमेल जितनी आई हैं, लाइक अगर हम स्टार्ट से बात करूँ, जो हम टेलीविजन पे देखते हैं, फिर जैसे जैनब अब्बास है, आप हो गई, रोहा है, बहुत सारे हैं, हमने सबको देखा है, अरीबा है जैसे, वो अपकमिंग आ रही है। सो एक ये बड़ी प्लेजेंट सी चीज है, बड़ी अच्छी हार्टनिंग चीज है कि हाँ यार, मजा आता है। कंपटीशन ही, लेकिन एक अच्छा है कि अनदर पॉइंट ऑफ व्यू भी एक आपको मिलता है कि हाँ यार ऐसे भी क्रिकेट देख सकते हैं। सो उस चीज पे आप वॉइस ऑफ क्रिकेट पे आए, फिर केपीएल, वो सारा, इसको कैसे आप कहती हैं कि राइट टाइम एट द वो राइट मोमेंट वाला वो सीन था, क्या था? I guess I've been very very lucky as well, if you think about it, Ramesh, because matlab, it was like a dream come true एक तरह से आप कह लें कि like life changed after Voice of Pakistan drastically for me. उससे पहले obviously nobody knew who I was, और ना ही मेरा कोई ऐसा ऐसी कोई I don't belong to a legacy cricket family or anything like that कि मैं कहूँ कि भाई हाँ, मेरे को connections थे या कोई network था within the Pakistani cricket community or anything like that. तो ऐसी तो कोई चीज नहीं थी. और मतलब if you think about it, it's like आपने कहा कि एक different perspective भी होता है, because obviously जब जहाँ पे gender difference आ जाता है, वहां पे perspective difference तो आना जो है वो it's inevitable, right? तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि men would look it in a very different way, and women would look it in a very different light as well, और हमारी अपनी struggles होती हैं, सारा कुछ होता है. But I've been very lucky in a sense कि since the Voice of Pakistan competition and everything, although I didn't end up winning, I don't really count that as a failure. Because it was a chance to learn a lot of things, and same with KPL as well. Like that was my first ever stint as a presenter, and I shared the com box with the likes of Marina Iqbal and Bakar Yunus,
Sikandar Buck. So that was such a huge learning process for me. To work with cameras and to do live interviews, that's something very different from doing a recorded show, because obviously a recorded show, yeah, just being an analyst on a show it's very different from doing a live interview with someone and doing it with the likes of Shahid Afridi and Wasim Akram and everyone. मैं तो पहले 5 मिनट तो मैं उनको देखती रह जाती थी. मैंने कहा कि this for real, is this like really my life now? So वो एक element काफी आ जाता है बीच में starstruck वाला भी, because this is the first time that I'm interacting with the legends like Wasim Akram and Waqar. So it was a wonderful experience. और मैं जितना इसके बारे में बोलूँ उतना कम है, but मैं कम ही बोलूंगी because we want to get on to the other things as well. So yeah, I've been absolutely very lucky. और commentator और presenter मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं हूँ या मैं बनूंगी. It was actually my brother who said कि यार you should go for commentary because you talk a lot. I was like, okay, like I didn't know if that was a compliment or not. Still don't, because he refuses to tell me. लेकिन उसका credit मैं अपने भाई को दूंगी because him and I we since like he grew like 7-8 साल का जब वो हो गया था, so we started watching cricket together and we've been watching it for like 7-8 years now. So he was like, you commentate like on the game when you're sitting on a sofa watching it, why don't you just try it for real? I said, okay, I'll try it for real. So then so उसका credit totally मेरे भाई को जाता है. नहीं जबरदस्त. और वो मैंने देखा था, केपीएल फॉलो कर रहे थे, वो जब ड्यूरिंग द मैच ब्रेक आप वो इंटरव्यू कर रहे थे वसीम अकरम का, मिसबा का, वो सईद अजमल. सो वो मैं देख रहा था कि यार 2 मिनट के लिए बंदा हो रहा है यार, अच्छा ये वसीम अकरम बहुत ही, वो हम भी होंगे, कोई भी होगा बिल्कुल. सो ऑल द बेस्ट हिजाब फॉर योर आगे जो जर्नी जैसे भी आपकी वो जबरदस्त है. बहुत अच्छा लगता है कि यार आप जैसे लोग आगे आ रहे हैं, हम भी हैं उसी जर्नी में साथ साथ ही हैं, और एक बड़ी एक हार्टनिंग सी मोटिवेशन आती है, हाँ यार कर सकते हैं. इसमें वो कोई डिस्क्रिमिनेशन और वो नहीं है, कंपटीशन नहीं चल रहा है, अच्छा लगता है. सो टॉपिक पे अब आते हैं. अब सीधी सी बात है, एशिया कप तो कवर नहीं किया लेकिन देखा है एज अ फैन. अभी तक दिल उदास है उस मैच को लेके, 56 और 5. फिर क्या हुआ था? फिर हुआ ये था कि हारिस रऊफ आया बोल करने अपना सेकंड स्पेल, और हम सोच रहे हैं कि जी बाबर इज डूइंग अ लॉट लाइक वेरी गुड कैप्टनसी राइट नाउ, फुल अटैकिंग मोड में जा रहा है. ही इज लाइक using his key bowlers right now, the fielding is going well, everything is going well, and we were all like jumping and shouting. और आपने वो देखी होगी बॉल जो हारिस रऊफ ने कराई थी for the 5th wicket. that was like वो वाली बॉल थी कि हम स्टेडियम में तो हमने लाइव देखा, but then we looked at the screen and we saw that replay of that ball स्टेडियम के अंदर, and we were like, what just happened? For like a period of like 5 minutes we were all like in shock. Is this for real? Then we looked at the scorecard and like 5 out हो गए. We're like यार इनको 120 के अंदर लपेटना पड़ेगा, like we're on track to do that. But unfortunately that did not happen, as we all know. So वो बड़ा heartbreaking scene था. It's very like it's even more heartbreaking when you see the players on the field right in front of you, because Dubai Stadium is like very different from Pakistani Stadium, which I was very like in a very good way, क्योंकि उनका जो like if you're in the audience you're very close to the boundary, right? So you can see with the naked eye कहाँ कौन सा खिलाड़ी खड़ा हुआ है और how they're reacting to it, like expressions क्या हैं, when are they being aggressive और सारा कुछ. So a couple of like catch drops as well, and then Shadab getting injured. All of that was very heartbreaking for us. But then again, cricket is a game that breaks your heart more than anything in the world, doesn't it? So I am gonna say this, that during the partnership जो आपकी चल रही थी रज़वान इफ्तिखार की, I did get a feeling that we're gonna choke this, because मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा वो element, वो desperation जो है ना, वो थोड़ी सी missing लग रही थी इस final में से. The desperation I saw during the Indian-Pakistani game, a couple days before that, was just something different. Like the way that we went for the chase, it was 180 plus. Like honestly, I don't think any one of us was backing Pakistan to chase 180 plus, were we? I mean, being an optimistic is like one thing, but looking at the facts, although we did win the toss, but India got a really good start, and then Virat Kohli ended up with such a nice innings as well. So you're just thinking, yeah, probably we might have like given them 20-30 runs more than we should have. So maybe it will be a close game, but we might not be able to make it. But then comes out Nawaz, and then Rizwan, and then that partnership took the game away from India. तो एक desperation नजर आई थी boys के अंदर उस game को जीतने की. Like they weren't willing to let it go. They were willing to do everything just to win that particular game, and they did win it.
as well. So मुझे लगा कि जब हम बैटिंग करने आए थे श्रीलंका के खिलाफ इन द फाइनल, there was just वो थोड़ी सी desperation वो जो है ना वो मिसिंग थी. क्यों मिसिंग थी ये आपको बाबर और बॉयज ही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकती. लेकिन that's as a viewer, as someone who was in the stadium, that was my observation. And yeah, we lost the final. It was very heartbreaking, but I don't particularly think कि इसमें squad का कोई मतलब बहुत बड़ा हाथ है, because I do believe that this was the best available squad that we could play. Obviously we had a lot of injured players as well. So this was the best available squad that we could play उस time पे, and I think everybody knew their role as well, which was pretty established उस time तक. So I don't think squad की इसमें ज्यादा गलती है. I just think they weren't desperate enough to win, and Sri Lanka was, क्योंकि आप उनकी fielding देख लो, उनकी batting देख लो, the way Rajapaksa came out and batted, it was just overall they were overall brilliant. And then Hasaranga came and took 3 wickets in an over, and I just wanted to cry उस over के अंदर, because I knew that we're not coming back from this no matter what we do. अगर आप देखो ना किसी भी tournament में Pakistan is dominating from the very start, you just know that they're going to choke it at one place or another, and you just wish कि वो choking जो वो group stage पे हो जाए, and it doesn't happen in a knockout match. But the last 2 tournaments that Pakistan have played, they have made it to the semi-final final, which is not an easy feat, to be honest. Even in Asia Cup आपकी बहुत competitive teams थी. Look at Afghanistan, look at India, look at Sri Lanka. They were such competitive teams over there. Bangladesh didn't really show up in Asia Cup, which is unfortunate. And उनके साथ भी अगर होता match, तो I'm pretty sure it would have been very competitive. लेकिन हर match, Ramesh, you have to look at the matches which जहाँ पे पाकिस्तान involved नहीं भी था, ठीक है? Every single match went towards the final 2 overs, didn't it? So कोई भी ऐसा match, I think Pakistan Hong Kong के match के अलावा there was no other match that was truly one-sided. उसके अंदर. So you have to understand that the level of cricket has gone to that point जहाँ पर you can't really win one-sided games anymore, no matter who you're playing against. नहीं, अच्छा था ये भी हिजाब, क्योंकि लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में हमने देखा था जो टॉस जीत रहा है वो ठीक है जीत रहा है, बट वो बहुत ही वन साइडेड गेम्स हो रहे थे. ठीक है, इस एशिया कप में हमने वो मिसकंसेप्शन भी दूर कर दिया लोगों का. सी वी वन द वो टॉस, हमने फाइनल में कर दिया. हाँ ठीक है, हमारा मूड नहीं है, जो जीत जो. सो बेसिकली वो अब हिजाब बात करेंगे इंग्लैंड सीरीज कल शुरू होने लगी है. 17 इयर्स बाद इंग्लैंड आ रहे हैं, वो हम सबको याद है. हम बच्चे ही थे, लेकिन हमें भी याद है कि वो जिस तरह के मैचेस हुए थे. शोएब अख्तर का स्पेल था, यूसुफ और कामरान अकमल की जबरदस्त बैटिंग, एंड फ्लिंटॉफ और शोएब अख्तर की एक टसल चल रही थी. अब इंग्लैंड की टीम है, ये बड़ा हम देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान टीम इस वक्त ऐसा एक माहौल देती है, टीम्स डिफरेंट, जैसे ऑस्ट्रेलिया आ रही है, इंग्लैंड आई है, या एशिया कप में बड़ा लवी डवी सा माहौल होता है कि अच्छा प्रैक्टिस के टाइम सारे दोस्त रोल भी लगा रहे हैं, ये सब. सो मैं पाकिस्तान के पहले स्क्वाड पे आता हूँ कि बहुत लोग स्क्वाड को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि हमने मिडिल ऑर्डर नहीं चेंज किया. क्यों नहीं किया, कौन आना चाहिए? मैं सबसे सवाल करो भाई, मुझे बता. मुझे स्क्वाड पसंद आया, मैं अपना सिर्फ व्यू पॉइंट दे रहा हूँ. मैं सिर्फ पूछता हूँ जिसको इशू है स्क्वाड से, मुझे बता दे कौन आ सकता था इनकी जगह जिनसे आपको इशू है. सो यार देखिए, मैं पब्लिकली बहुत ज्यादा इस बारे में बात नहीं करती कि स्क्वाड ठीक है या नहीं है, बट आई विल टेल यू वन थिंग. जो मेरे हिसाब से आई एम एक्चुअली ग्लैड दैट दे डिडंट चेंज द होल स्क्वाड, बिकॉज कंसिडरिंग हमारी कैसी परफॉर्मेंसेस रही हैं. यार, who would you change? Would you literally change Rizwan? Would you literally change Asif? Would you change Shadab? Would you change Nawaz? Would you change any of our fast bowlers? I don't believe so. हाँ, अगर आपका इशू कहीं आता है तो वो मिडिल ऑर्डर में आता है. और मुझे जहां तक एक वाज़ेह कमजोरी नजर आती है हमारे मिडिल ऑर्डर के अंदर, वो है the inability to play spin very well. Because we saw Pakistani batsmen struggling against spin, which is very unfortunate, क्योंकि there was a time when we used to play spin very very well. तो अब जब आप देखते हो उस चीज को कि हाँ यार, जब भी मिडिल ओवर्स आते हैं T20 के अंदर, that's when Pakistan struggles, right? और which is very unfortunate, क्योंकि हमारा टॉप ऑर्डर भी बहुत एक्सप्लोसिव नहीं है. It's not like we have ओपनर्स जो कि बहुत एक्सप्लोसिव है और हम उनको कह दें कि वो इमरान नजीर टाइप के हो, और हम कह देंगे भाई हाँ ये तो मतलब पहले 6 ओवरों में हमारा 70 जो है ना स्कोर वो पक्का है. इस तरह का टॉप ऑर्डर हमारा नहीं है, ठीक है? सो कंसिडरिंग दैट, यू नीड अ कपल ऑफ प्लेयर्स इन द मिडिल ओवर्स जो कि थोड़ा सा स्पिन को बेहतर खेल सकें. आई थिंक नवाज प्लेज स्पिन वेल, शादाब भी अच्छा खेलते हैं. सो आई वुड जस्ट से कि send those people up the order, considering the situation of the game, like we did in the India Pakistan match. मेरा यही You send Nawaz. हिजाब इससे मेरा यही क्वेश्चन आगे मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ कि जिस तरह हमने शादाब और नवाज को देखे कि वी सेंड देम अप द ऑर्डर, उन्होंने बड़ी क्रूशियल इनिंग्स खेली थी.
शादाब के वो जो 35 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अफगानिस्तान के मैच में नवाज के 42 Yep. बहुत इंपॉर्टेंट थे, और वो बड़े And they मिस were both मोमेंट्स man वाले of the थे। matches. दे And they were both एग्जैक्टली man of the matches in both एग्जैक्टली। the games. So you have तो to understand जैसे कि उसका लाइक कितना वी, impact था. if we see like Quran, like in older times we developed Shoaib Malik as middle order batsman. He was a bowler, he was an all rounder, तो हमने उनको डेवलप किया, like one down बैट कराया, two down कराया, ओपन कराया। So why don't we do this with these guys like नवाज, शादाब के, यार इनको मिडल ऑर्डर में चांस दिया जाए, because in PSL Islamabad United शादाब scored a lot of runs in middle order, so as नवाज। So हम इनको like कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, and that's what I would want from this series as well. I honestly will tell you one thing, Ramesh. I don't care if we win this series or not. All I care about is whether we experiment or not. Okay? Because I think that's very, very important. I'm not a fan of experimenting during the ICC tournaments or like Asia Cup tournaments, multi-team tournaments. I'm not a fan. I think once you have a playing 11 in your mind, just play with it, stick with it. आज नहीं चलेगा तो अगले मैच में लाजमन चलेगा, because it's T20, right? दूसरी बात ये कि मैं चाहती हूँ कि जिस तरह बायोलेटरल सीरीज होती हैं, स्पेशली इन योर होम कंडीशंस अगर हो रही हैं, you have an advantage, a huge advantage. You can experiment a lot. Okay? You can experiment fluid batting order. You can experiment your pacers, like rotation of your pacers. I don't want you to play the same pacer for 7 consecutive T20s. That's absolutely not the way to go for it. So आपकी rotation होनी चाहिए pacers की, आपकी bench strength जो है वो test होनी चाहिए, आपका batting orders जो है वो test होना चाहिए, और उसमें बहुत important है कि आप ऐसे players जो कि spin को अच्छा खेलते हैं उनको, I mean, considering कि आपका टॉप ऑर्डर अगर जल्दी आउट हो जाता है तो आप उनको जल्दी भेजें. The other thing that I believe is कि you need a player जो कि dominate करे spin को. In my mind at the moment, if you talk to me, in my mind right now, that player is Azam Khan. I know कि उनके ऊपर बहुत सारी तनकीद होती है उनकी fitness के हवाले से और सारा कुछ, but I've seen him play like a lot of times now. He played in KPL as well, और इससे पहले भी उनको देखा है. He just has the very like, उनमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, एंड यू नो कि स्पिन को अगर आपने आउट ऑफ द पार्क मारना है, अगर आपने स्पिन को छक्के मारने हैं, अगर आपने लिटरली उनको पीटना है ना, यू नीड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ फॉर दैट. पेस को पीटने के लिए प्रॉब्ली इतनी स्ट्रेंथ इस्तेमाल नहीं होती जितनी स्पिन को करने के लिए होती है, एंड ही गॉट दैट पावर इन हिम. ठीक है, ही इज वर्कड अ लॉट इन दैट. मेरा उनसे इंटरव्यू भी हुआ था, तो आई आस्क्ड हिम कि आजम ये जो है आपकी नेचुरल एबिलिटी है या यू वर्कड अ लॉट ऑन दिस? ही सेड नहीं, आई हैव वर्कड अ लॉट ऑन दिस. उसके लिए बड़ी कोर स्ट्रेंथ चाहिए होती है. You have to become a spin basher. So in my mind I would say कि that's one element जो कि हमारी बैटिंग से मिसिंग है. I'm not like, I don't want to be too critical of Rizwan and Babar at the moment, नहीं because नहीं, वो I do ऑब्वियसली believe वो एक बड़ी, मैं तो उसको समझता हूँ बड़ा फजूल सा एक क्रिटिसिज्म है कि आप उन चीजों की बात करो। आई मीन ठीक है, दुबई की कंडीशंस बड़ी ट्रिकी सी हैं, पिच का कोई पता नहीं, समटाइम डबल पेस क्रिकेट भी होता है यूएई कंडीशंस में। मैं उस बिल्कुल दिन एक होता है. स्टैट हाँ, देख रहा था अंजाम, मेरे पास एक स्टैट्स आए थे यार, टॉप पार्टनरशिप्स जो T20s में लाइक 150 107 वो बाबर और रिजवान की हैं। लाइक वी वर yeah, चेजिंग they've got like I think 205। 4, yeah, they've got like I think 4 150 plus partnership, which is like the आई डोंट only नो, मैं pair क्यों opening pair in the स्ट्राइक रेट world. स्ट्राइक रेट टेप बॉल के लड़के भेज दो भाई, फिर तो मैं यही कहूंगा ओपन करा लो किसी से, यही हो सकता है। जब मेरा एक क्वेश्चन अब थोड़ा सा मैंने पूछना है, एक प्लेयर है स्क्वाड में जिसको आपने केपीएल में देखा भी है, अबरार द मैजिशियन। जी जी इब्रार के बारे जी में जी. थोड़ा सा यार हमें बताओ, क्योंकि हमने उसे पीएसएल में देखा है, केपीएल में देखा है, लेकिन एक क्योंकि यू इन द ग्राउंड यू सॉ हिम, क्या उस पे आप देख रहे हो कि ही हैज इंप्रूव्ड अ लॉट आफ्टर दैट पीएसएल टूर्नामेंट? नहीं, आई डू बिलीव कि उसका जो कॉल अप था, द मेडन T20 कॉल अप वाज वेल जस्टिफाइड, क्योंकि ही प्लेड वेरी वेल इन केपीएल, और नॉट जस्ट एज अ स्पिन बॉलर, एज अ फील्डर ही इज वेरी एनर्जेटिक इन द फील्ड एंड एवरीथिंग, और उसकी एक अच्छी प्रेजेंस है ऑन द फील्ड. आई रिमेंबर Marina and I were talking about this in the comm box, and we were like, we have the spin issue चल रहा है पाकिस्तानी टीम के साथ. Like I believe like after Saeed Ajmal, we have really been looking for a genuine spinner जो कि उस तरह का impact create कर सके, especially in a T20 format. We have once upon a time we used to have Saeed Ajmal, Shahid Afridi, even Mohammad Hafiz used to be very very effective. हमारे जो ट्रियो होता था स्पिन का, we're actually missing that element. मतलब अब I do believe, I know कि शादाब and नवाज are excellent players, and they are, शादाब खास तौर पे, लेकिन ये कि we still need to keep looking, because they're not going to play forever, right? And there will come a time जब कि आपको उनको रेस्ट करवाना पड़ेगा, then who are you going to replace them with? So बहुत अच्छा एक डिसीजन था ब्रार को लेकर आना. He's very confident as well, like he's very young but he's very confident.
तो मुझे ये चीज अच्छी लगती है when young players are confident, क्योंकि they know their role very well, they know what things to work on. और I think बहुत ज्यादा timid होने से ना people can walk all over you, ठीक है? And by that I mean people in authority or people in power. So when you're confident in your own skills, ये एक बहुत अच्छी निशानी होती है players की. You need that because we all saw कि किस तरह, let's talk about like Mohammad Rizwan for example. Let's talk about एक time था when a lot of people used to criticize him and say stuff like कि वो छक्का नहीं मार सकता, वो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, वो खेल नहीं सकता, he can't really be a utility player in a T20 format. Then he turned that around. Like the way he turned that around, it's literally like a fairy tale story. So that's going to be an inspiration for a lot of other players as well. Like आजकल की, like in today's day and age, you are playing 3 formats. You need to be a player who can adjust their game accordingly. ठीक है? 10 दिन पहले आप टेस्ट खेल रहे हो, 10 दिन बाद आप T20 खेल रहे हो, उसके 10 दिन बाद आप ODI खेल रहे हो, उसके 10 दिन बाद आप फिर टेस्ट खेल रहे हो. So if you are a player जो कि जिस पे डिपेंड करती है उनकी national team to play all 3 formats, you need to be very very flexible with that. And I do believe कि अब्रार में वो quality है, like he can be a very impactful bowler और अच्छा fielder भी है. And I really hope that we test them out. मैं उसको बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वो अच्छा लगा था. उसपे मैं उसकी मतलब मैंने क्वालिटी देखी, वो डरता नहीं है. वो कुछ मार भी पड़ी है तो लाइक वो कहते हैं ना बड़े दिल का बॉलर है यार, पड़ गई है खैर है, प्रेशर भी लेना, करना है ऐसे ही होना चाहिए. और वो बिल्कुल ऐसे ही फील्डर भी होना अच्छा है चाहिए क्योंकि वो काफी एजिलिटी है उसमें, कैच की सेफ फील्डर, रन आपको रोक के देता है. हिजाब एक क्वेश्चन मैं सबसे ही बेसिकली बड़ा पूछता हूँ, क्वेश्चन मैं आपसे भी है कि सिंस यू फॉलो क्रिकेट अ लॉट, यार इस टीम में ऐसा क्या इतनी वो है पॉजिटिव एनर्जी का है कि जब कराची टेस्ट हुआ था ऑस्ट्रेलिया से, 2 दिन इन्होंने एक मतलब अजीबोगरीब पिच पे बैटिंग कर ली. बाबर ने 196, वो कोई नहीं भूल सकता. वो मैं कहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टर्नओवर था. उससे पहले वर्ल्ड कप का, फिर ये एशिया कप कोई रेट नहीं कर रहा था टू बी ऑनेस्ट. फाइनल के बाद पता नहीं यहाँ पे क्यों सारे डिप्रेशन में चले गए हैं. मैं तो भी कहता हूँ यार हमने फाइनल खेला, हमें तो कोई रेट भी नहीं कर रहा था फाइनल के लिए. सब कह रहे थे इंडिया अफगानिस्तान फाइनल खेलेंगे बिकॉज दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट. हम किसी आ ही नहीं रहे थे, इंजरीज इशू भी और थे हमने एक ही मैच में दोनों टीमों को बाहर कर दिया, मतलब देख लेना. एग्जैक्टली वो चीज थी कि यार इस टीम में ऐसा क्या है कि मतलब बहुत लोग ये भी कहते हैं इस टीम में वो चीज नहीं है जो 90s वाली टीम में थी. इस टीम में कुछ ज्यादा ही वो कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट लेवल, वो एक है कि यार करके दिखाने देखी जाएगी, वो डर निकल गया. तो क्या आपको क्या फील हुआ? देखिए मैंने 90s में तो बहुत सारी क्रिकेट नहीं देखी बिकॉज आई वाज अ बेबी, लेकिन डेफिनेटली सॉरी, लेकिन बट स्टिल लाइक हम पोस्ट बट आई 2007 नो से व्हाट यू बात मीन करें, बाय बट दैट. क्योंकि हमने वो एरा भी देखा जब प्लेयर्स अपने लिए खेलते थे. हमने थोड़ी सी वो सेल्फिशनेस भी देखी है इस टीम में, हमने बड़ा कुछ थोड़ी देखा, सी नहीं, थोड़ी सी नहीं, हमने बहुत बहुत डार्क देखी, पीरियड हमने देखा है इस बहुत टीम डार्क का कि पीरियड हम देखी. बड़े परे हो जाते हैं यार क्या कर. बट अब हमें एक ट्रस्ट वापस आया, बहुत इवन जो क्रिकेट नहीं भी देखते वो भी अब वापस आए हैं देखने. अब मतलब इतने लोग हैं बता नहीं सकते, लेकिन क्या इस टीम में ऐसा हुआ है, क्या है इस टीम? देखिए you kind of answered your own question वहां पे, because Pakistan was coming out of a very dark period in terms of cricket. No home cricket, ठीक है? Your players are fighting for captaincy, your players are fighting for the spot in the team. They're not really happy with the team culture or the management or the way that they're being dealt and stuff like that, which obviously उसके हजार elements होंगे. I'm not like saying के they were just doing it out of spite or anything. लेकिन हाँ एक बहुत डार्क पीरियड हमने गुजारा है 2009 onwards पाकिस्तान क्रिकेट के. why the squad is so likable, उसकी काफी सारी वजूहत हैं. पहली तो ये वजह है कि your captain is very likable, ठीक है? He is the kind of captain, because I've seen him up close up तो मतलब he's the kind of captain who demands respect, and I have seen all the players of the team giving him that respect, ठीक है? You have to understand कि ये they don't have much age difference. Like Babar and the other boys, they've hardly like 1-2 साल का difference है. I think Rizwan is even older than Babar. Yes, So Rizwan is they older. don't have, Rizwan तो like yeah, वो सेरा से खेल रहा है. exactly. So but you have to understand that even though he's young, he has this aura about him that he demands respect from everybody, on his team. And in return for that respect, he's willing to go to every length to support those boys. ठीक है? That's what's something that we've seen पिछली teams में बहुत missing था. We're not backing players, we're giving them a chance in 1 or 2 games and 1 or 2 series, and then we're just destroying their careers by saying, "नहीं भाई, you're not international material, go home."
ठीक है। जब आप किसी प्लेयर को उठा के लाते हैं डोमेस्टिक से, एक एडजस्टमेंट पीरियड होता है, दे हैव टू एडजस्ट टू द इंटरनेशनल क्रिकेट, उसका प्रेशर। मैं आपको बता रही हूँ, स्टेडियम में बैठ के मेरी हालत खराब हो गई थी मैच देखते हुए। आई हैव नो आइडिया हाउ नसीम शाह डिड व्हाट ही डिड, दिस वाज हिज डेब्यू। दिस वाज लाइक, मैं उसकी शक्ल देख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ यार ये 19 साल का लड़का है, 19 साल की उम्र में मैं क्या कर रही थी, घर बैठी हुई थी, कुछ भी नहीं कर रही थी, ठीक है। और मैं सोच रही हूँ कि लुक एट हाउ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, लाइक मेंटली स्ट्रांग ही इज, दैट ही इज मेकिंग हिज डेब्यू अगेंस्ट इंडिया इन अ गेम जिसमें 27-28 हजार बंदा बैठा हुआ है स्टेडियम के अंदर, और मेजोरिटी वाज द इंडियन क्राउड, बिकॉज इट ऑलवेज लाइक, हम आपको पता है न्यूट्रल वेन्यू में इंडियंस हमेशा ज्यादा होते हैं पाकिस्तानी से। तो and he's making his debut and he's taking the first wicket in the very first over, and I'm just shocked. I'm like, kaise, matlab, but you have to understand he's doing it because he has full backing of his management, he has full backing of his captain, he has literally full backing of 10 other players जो कि खेल रहे हैं वहां पे, ठीक है। After every ball I saw like a different player coming up to Naseem. I saw Sean Tate running around the stadium, going to Naseem after every over, और उसको back पे, you know, he was trying to just cheer him up कि अगर उसको एक आधी बाउंड्री लग गई है, he was just like, you know, have some water, chill a little bit, you were doing fine, कोई बात नहीं, T20 फॉर्मेट है, हो जाता है। I'm just assuming किसी तरह की आपकी कॉन्वर्सेशन होगी, all I saw was gestures obviously। तो मतलब इस तरह ये जो सपोर्ट होती है ना, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू। और आपको पता है पाकिस्तानी बॉलर्स हमारे ना, लाइक दिमाग तो गर्म होता ही होता है उनका। लुक एट हारिस, लुक एट नसीम, लुक एट हसनैन, लुक एट देयर पेस, लुक एट देयर एटीट्यूड। इट्स समथिंग दैट we've been missing for a very long time, not saying we didn't have fast bowlers, but ये वो वाले फास्ट बॉलर्स हैं जो कि 90s में हुआ करते थे, जिनसे दुनिया डरती थी। वसीम बकार एरा की बात कर रही हूँ मैं। तो दैट्स लाइक, इसमें बहुत बड़ा हाथ आपके कैप्टन का है, इसमें बहुत बड़ा हाथ आपके वाइस कैप्टन का भी है, जो कि शादाब है इन द व्हाइट बॉल फॉर्मेट एंड रिजवान इन द रेड बॉल फॉर्मेट। अनकंडीशनल सपोर्ट है वाइस कैप्टन की टुवर्ड्स द कैप्टन, ठीक है। सो व्हेन दे बोथ स्टैंडिंग टुगेदर, देयर इज वेरी लिटिल लेस यू नो स्पेस टू क्रिएट ट्रबल, if you know what I mean. तो उसमें यही होता है कि because they're both you know on the same side, they're standing together, they're thinking the same thing, they want to implement the same kind of plan in the team, so that's why they're very likable, ठीक है। I think उसमें अब आपको ये like थोड़ा बहुत क्रेडिट इसमें मैं दूंगी सरफराज अहमद को भी, क्योंकि हम बहुत सारे प्लेयर्स जो आज देखते हैं, शादाब हो गए, शाहीन हो गए, ये इस तरह के सारे आपके प्लेयर्स, दे स्टार्टेड इन अंडर हिज कैप्टनसी। So I believe कि सरफराज का बहुत बड़ा रोल था in like removing that toxicity element from the dressing room of Pakistani cricket. That's where it all started, and then Babar nurtured it in his own way. Or I think this is the precedent that should be set for the coming teams and coming captains as well. Inshallah, jab when we are past this era of Babar, which I don't really want like कि जल्दी खत्म हो, तो we are all loving it. So that's like सब बहुत सारे elements हैं कि why this team is so likable. I think PSL भी बड़ा रोल प्ले करता है, लाइक PSL में सारे साथ होते हैं, इन सबका आपस में कमराडरी भी सेट है, दोस्तियां ये भी हमें नजर आती है। रिजवान सबको आके वो जेस्चर शो करता है, हक वाला, फिर बाबर और शादाब जिस तरह मैचअप अपना डालते हैं कि तू मुझे आउट कर, लाइक उस तरह का एक हमें देखते हैं। कंपटीशन तो है बट रिस्पेक्ट एलिमेंट, वो दोस्ती यारी, और अल्लाह ना करे नजर लगे यार, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हमने ऐसे मैचेस हमने जिसे कहते हैं ना टर्न अराउंड किए। कराची टेस्ट कोई नहीं भूल सकता, हिजाब कोई भी, लाइक इवन एशिया कप हम नहीं थे कहीं बट हमने फाइनल खेला, लाइक हमें तो ज्यादा किया जाता है, फेवरेट्स किया जाता है, यार ये फेवरेट है, ये जीत जाएंगे। वो तो अलग बात है कि हमने छोटी मोटी गलतियां की थी। सो लास्ट क्वेश्चन हिजाब मेरा ये भी वैसे एक एलिमेंट है रामेश इसके अंदर कि दिस टीम doesn't want to give up. आप ये समझें इस बात को कि even when they're like in a situation जहाँ पे आपको लगता है, गेल टेस्ट देख लें अभी श्रीलंका वाला, लास्ट चेस था आपका, हिस्टोरिक चेस था, कभी जिंदगी में कभी इससे पहले नहीं हुआ। कराची टेस्ट देख लें हम, they just have this like understanding among each other कि we are not going to give up, ठीक है। They have this desperation in themselves to win, which is what we've been missing in Pakistan for a very long time. हमने हमेशा देखा कि जब पाकिस्तान कभी भी किसी बड़ी टीम के साथ खेलने जाती है, आधा मैच तो उनके एटीट्यूड की वजह से आप लूज कर जाते हैं। लाइक द बॉडी लैंग्वेज वाज यूज्ड टू बी सो मेलो, वो एक एथलीट की बॉडी लैंग्वेज नहीं लगती थी, वो ऐसा लगता है जैसे जहमत की है ग्राउंड पे आके। I'm not even kidding. That's what it used to look like. Although I'm not saying they meant it that way, लेकिन that's how it came across. Optics बड़ी जरूरी होती हैं एक टीम के लिए। जब आपको नजर आता है एक बंदा जिसके कान से खून निकल रहा है and he's still coming on to bowl and he's still giving his 100% in the field and he's not willing to go outside
the field, which is I'm not basically supporting this. I think once you're injured, you should be off the field. And I'm just saying, आप उनकी desperation देखो ना यार, they wanna be a part of this team. Even they Hijab, want to win it. You were in stadium जब पहला मैच था, नसीम क्रैम्प पड़ गए, he can't bowl. उस बेचारे ने मतलब वो जिस तरह उसने बॉल किया जडेजा को, वो एलबीडब्ल्यू हुआ, मतलब मैं देख रहा था, मैं कहा यार ये जुल्म है, बस कर दो. बट जिस तरह फाइट कर रहे थे लास्ट बॉल तक, इवन नो वन वाज एक्सपेक्टिंग कि नसीम 2 छक्के मार देगा, उसने आगे जिस तरह. Absolutely. तो ये टीम एक है. लास्ट 2 क्वेश्चन थे आप छोटे छोटे थे कि इस सीरीज में 7 मैच सीरीज में पाकिस्तान की किस प्लेयर को आप देख लेंगे, हाँ यार ये खेला तो ये आई थिंक ये करेगा. जैसे शान मसूद से बहुत एक्सपेक्टेशन है लोगों को, बाबर से ऑब्वियसली है. हारिस को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि रिजवान हैज बीन रेस्टेड फॉर फ्यू मैचेस, सो हारिस पे लिया जा रहा है चांस, तो है होपफुल हारिस. देखो, I mean, we all saw the nasty fall that Rizwan took in the second last match. That was very unfortunate. Or we weren't even sure if he was going to be able to play the final. But Rizwan is Rizwan, you know. He has that superhuman. Exactly, he has the superhuman element in him. वो warrior है. I think वो पिछले किसी जन्म में जो है ना, वो पता नहीं कोई definitely वो warrior रहा होगा. मार्वल का पार्ट रहा होगा पहले. हाँ, exactly. तो वो superhuman उसके अंदर quality है. Rizwan तो Rizwan है, but I'm glad that they are giving him rest because he deserves it. पहली बात. दूसरा, I'm very happy that Mohammad Aris is going to take his place because I'm really like the kind of person who wants to look towards like players जो कि हमारा future है, not towards the players जो कि already खेल चुके हैं, या they've done their part and stuff like that. So I'm glad that Mohammad Aris was in contention for that place, and I will be very much looking forward to how he plays that. Let's see if he opens with Babar. That'd be an interesting thing to see because because we all know Mohammad Haris की जो natural game है, he is a hitter. So वो या तो वो 4 बॉलों में 4 छक्के मारेगा या वो चौथी बॉल पे आउट हो जाएगा. There's no other way. so we'll just see कि अब ये जो approach है, क्योंकि अभी तो हमारी approach ये है कि हमारा top order जो है, they want to stay on the pitch as long as they can. अब ये जो अप्रोच है कि मारो या मरो वाली जो अप्रोच है, जो मोहम्मद हारिस की है, no one can criticize के हारिस को ओपन करा के स्ट्राइक रेट इशू. you have no idea how Pakistani fans mind works. They'll find a way to criticize that. That is why मैं भी जब अपने भी कंटेंट कर रहा था, मैं भी बीच में इनको रगड़ देता हूँ थोड़ी बहुत पंजाबी से. लेकिन ये चीज है, तो आई थिंक जो हम लोग बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं कि यार ये सीरीज अच्छी होगी. लेट्स सी रिजल्ट क्या आता है, बट वी शुड. And I'm very excited about Shan Masood as well. You mentioned Shan, and I've been like मेरा तो फुल एजेंडा चल रहा था बहुत अच्छे से. I want Shan Masood. मैंने लास्ट में पूछा, मैंने इसलिए कहा लास्ट पे आऊंगा. I want Shan Masood in the team. देखिए, I do believe that Shan is the kind of player who has is probably the most improved player I've seen in the last couple of years. His game, उसकी natural game, उसको सारे कहते थे नहीं जी ये टेस्ट का player है. The only thing he knows is how to block. Then he played PSL, captaincy की उसने, captaincy छोड़ी उसने. He played in different positions. 1 से लेके 4 तक उसने सारी पोजीशंस में खेला. His county run was something out of a dream. ठीक है, अभी जो county वो खेल के आया and everything. And I do believe कि Shan will be a very good addition to the Pakistan team. Now let's see how they play him. ठीक है, अब देखो इससे बहुत फर्क पड़ेगा. How are you going to play Shan Masood in a T20? How are you going to play Shan Masood in a one day? Honestly, I believe that he's more suited towards the longer format as well. क्योंकि उसका जो stroke play है, it's so nice to see that I really want to see him do that rather than play some unorthodox shots and then get out. I'd rather take my time, watch Shan Masood play a very nice inning. So वो one day में ही हो सकता है. लेकिन if you think कि मतलब if people are saying कि जी हमारे top order में Shan Masood को आप डाल रहे हैं, he's also a slow player and everything. No, he's not. You have to understand he's not a slow player, not anymore. He's the kind of player who has impeccable game awareness. He's very intelligent, mashallah. One of the most brilliant minds I think we have in a young mind in Pakistan cricket at the moment. So that comes with a lot of game awareness as well. Even if you see Shan Masood, उसने अपनी गेम बहुत improve की है. I mean मैं देख रहा था 2020 से पहले उसका strike rate in T20 is like 125, 126. He's like now 135 between 140 यार, और क्या चाहिए इनको. Exactly. He's the kind of player who can stay out there long. He's the kind of player who can play an impactful innings as well. And that's what you want, basically. We all know that Rizwan and Babar, they like to take a little bit of time to get going. ठीक है, हमें पता है ये. पहले 6 ओवरों में आपको नहीं 70 मार के देंगे वो. They'll probably just give you around 40, 45. I don't mind that. You know why? Because I've seen them accelerate once they are done with like 7-8 overs. I've seen them. हमें अभी याद नहीं ना, because क्योंकि हमारे हैं वो एक
So ठीक है। देखिए, Anyways, you have to हाँ, understand, Ramesh. Let me just say this one point. You have to understand कि रिजवान ने जो इनिंग्स खेली या जिस तरह की उसने इनिंग्स खेली पूरे एशिया कप में, उसकी एक वजह ये भी थी that बाबर was really really out of form. पहले ही ओवर में या दूसरे ओवर में या तीसरे ओवर में बाबर was losing his wicket. ठीक है? Once your captain goes back to the pavilion, once the best batsman in your team and arguably in the world goes back to the pavilion without scoring or getting into the double digits, puts a lot of pressure on Rizwan as well. He knew that he had to play long. ठीक है? वरना Rizwan की जो natural game है, it's not just defending the ball or वो chances he take लेता है। chances. हाँ, वो तो सब वो लेग लेगा। साइड पे चांस लेगा, वो तो मिड विकेट as a पे चांस senior लेगा, pro, वो हर जगह लेगा। he took the responsibility और कुछ मैचेस भी अच्छे जिताए, इंडिया वाला सबको याद है। He entered the innings, तो मैं तो होपफुल हूँ। थैंक यू सो मच हिजाब, थैंक यू सो मच। हमने बड़े शॉर्ट नोटिस पे किया है, लेकिन आई होप मैं आपको आप बार बार जहमत दोहरा पाए। आई होप यू आल्सो एंजॉयड, और थैंक यू फॉर 3 years। मेरे शो के 3 साल हो गए, तो आपने उसको सेलिब्रेट करवा दिए। थैंक यू सो मच। Not at all. It was a pleasure being here, or hopefully we'll do a lot more of these in the future as well. And let's just hope and pray that the future of Pakistan cricket is as bright as we think it is. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो हिजाब हमारे साथ हैं, आप लोगों को मजा आया होगा यार। ये लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, हिजाब को भी फॉलो करो, बड़ा अच्छा गाती है, बड़े अच्छे ट्वीट्स होते हैं, और बस करो यार। थैंक यू सो मच।